हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं मेथी पालकनी भाजी। तो चलो रेसिपी शुरू करिए। तो अहीं मैं 2 कप मेथी और 1 कप पालक है ए बंने धोई और साफ कर लीधी है और झीणी सुधारी लीधी है। तो एक पेन में आपणे गैस चालू करीने गैसनी फ्लेम मीडियम राखवानी और हवे आपणे 2 टेबलस्पून जेटलुं तेल उमेरीशुं। तेल गरम थाय एटले 1/4 टीस्पून जेटली राई, 1/4 टीस्पून जेटलू जीरु, 1/4 टीस्पून जेटली हींग, 1/4 टीस्पून जेटली हळदर। हळदर आ रीते गरम तेल में ज नाखवानी जेथी काची स्मेल न आवे। त्यारबाद 1/2 टेबलस्पून जेटली लसणनी सूकी चटनी जेने मैं लसणनी कड़ी अने लाल मरचुं नाखीने मिक्सर में पीसीने बनावी छे। त्यारबाद 1/4 कप जेटलू लीलू लसण। लीलू लसण अवेलेबल होय तो नाखवानुं, पण शियाळामां आसानीथी मळी जाय छे एटले नाखवुं, खूब ज सरस टेस्ट आवे छे। हवे मिक्स करी लीधुं छे बधुं। त्यारबाद हवे नाखी देशुं एमां 1 टमेटुं। मैं अहीं 1 टमेटाने झीणुं समारी लीधुं छे अने हवे आपणे टमेटा छे थोड़ा सॉफ्ट थाय त्यां सुधी एने कूक करवाना छे। तो लगभग 2 થી 3 मिनिट में टमेटा छे कूक थई जशे। मीडियम फ्लेम ज राखवी अहीं। तो हवे टमेटा छे कूक थई गया छे। तो हवे आपणे जे मेथी अने पालक समारी छे एने नाखी देशुं आमां। तो पहला मेथी नाखवानी छे अने त्यारबाद पालक नाखी देशुं। तो हवे मेथी अने पालक ने सरस रीते मिक्स करी लेशुं। तमे जो इच्छो तो खाली मेथी अने खाली पालकनी भाजी पण बनावी शको छो। ए टोटली तमारी चॉइस पर डिपेन्ड करे छे, पण आ रीते बंने भाजी मिक्स करीने बनाववाथी पण सरस टेस्ट आवे छे। तो मिक्स थई गयुं छे। हवे करीए मसाला। तो अहीं 1 टीस्पून जेटलुं धाणा जीरुं पाउडर, 1/2 टीस्पून जेटलुं मीठुं। मीठुं छे ए अहीं पालक आपणी थोड़ी सॉल्टी होय छे एटले ओछुं नाखवुं। त्यारबाद 1 टीस्पून जेटलुं लाल कश्मीरी मरचुं अने हवे मिक्स करी लेवानुं छे। कई ज झाझा मसाला आमां नथी नाखवाना होता, रेग्युलर घरमां होय ए ज मसाला नाखवा। तो आ भाजी अने मसाला सरस रीते मिक्स थई गया छे। हवे आपणे आने थोड़ी वार माटे चढ़वा देशुं। तो ज्यां सुधी ए चढ़े त्यां सुधीमां आपणे आ भाजीमां नाखवानी चणाना लोटनी आटी बनावी लईए। तो एक वाटकामां आपणे 1/3 कप जेटली छाश लेवानी छे। छाश तमे खाटी के मोड़ी बंने प्रकारनी लई शको। त्यारबाद 1 टेबलस्पून जेटलो चणानो लोट नाखवानो छे। आ आटी छे ए फ्लोइंग कन्सिस्टन्सी वाળી बनावવાની છે એટલે આપણે ચણાનો લોટ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો જ નાખીશું અને હવે લમ્પ્સ ન રહે એ રીતે એને મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો આ ચણાના લોટની આટી તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એના ભાગનો મસાલો કરીશું। તો આમાં તમે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું, પિંચ જેટલી હળદર અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું। મીઠું એના કરતાં ઓછું નાખો તો પણ ચાલે। અને હવે બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લેશું। મસાલો સરસ રીતે આ આટીની અંદર મિક્સ થઈ જાય એ રીતે એક મિશ્રણ તૈયાર કરી લેવાનું છે। તો આપણું આ ચણાના લોટનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે આપણી ભાજી જોઈ લઈએ। તો આ ભાજી તમે જોઈ શકો છો તેલ છૂટું પડી ગયું છે। તો આપણી ભાજી તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે જે ચણાના લોટની આટી બનાવી છે એને આપણે એક એક ચમચી કરતાં નાખતા જવાનું છે। એકસાથે રેડી ન દેવું, एक एक चमची करीने नाखता जवानुं। तो तमे जोई शको छो मैं चणाना लोटनी बधी ज आटी आमां नाखी दीधी छे। हवे आपणे चमचानी मददथी एने मिक्स करी लेशुं। तो तमे जुओ तो एकदम मस्त टेक्स्चर छे ए भाजीनुं आवी गयुं छे। આવી રીતે ચણાના લોટની આટી નાખીને ભાજી બનાવવાથી ભાજીનું બાઇન્ડિંગ ખૂબ જ સરસ આવે છે, કારણ કે બંને ભાજીને પોતાનો કોઈ બાઇન્ડિંગ એજન્ટ ન હોવાથી એ છૂટી છૂટી રહે છે। તો આવી રીતે બનાવવાથી આપણી ભાજી સરસ બને છે। તો ભાજી તૈયાર છે। હવે ગેસ બંધ કરી અને એને સર્વ કરીશું। થોડીક પ્રિપેરેશન કરી હોય તો આ ભાજી છે ફક્ત 5 થી 7 મિનિટમાં બની જાય છે। એટલે કે આ ભાજી ગરમ ગરમ જ પીરસવી, ठंडी है ए आ भाजी सारी लगती नहीं। तो अपनी आ भाजी है ए पीरसवा माटे डन है। तमे ने रोटला साथे सर्व करी शको छो। तो आ शियाळामां तमे एक वखत आवी चणाना लोटनी आटी नाखीने भाजी घरे जरूरथी बनावजो अने तमारो अभिप्राय मने कमेंट बॉक्स में जरूरथी कहेजो कि तमने आ रेसिपी केवी लागी छे। અને જો તમને મારી રેસિપીઝ પસંદ આવતી હોય તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। મળીએ નવી રેસિપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।